This is a death case, Manoj. The date of incident is 30/4/2013. 4/13 And the deceased is aged about 21 years, Manoj. मामला इंश्योरेंस क्लेम को लेकर है और इसमें जिनकी तरफ से ये मांग की जा रही है क्लेम की, उनके और जिस वाहन से ये दुर्घटना हुई है उनके बीच में ये मामला है। अब मगर ये मामला टर्न यूँ लेता है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस के स्थान पर पुलिस विभाग की एक गाड़ी की बात आ जाती है। तो इसको सुनिए, ये एक तरफ इंश्योरेंस के मामले को भी हमें समझाता है और साथ में इस तरह के मामले को भी कि एम्बुलेंस की जगह कैसे एक पुलिस की गाड़ी की बात इसमें आई और उसमें क्या हुआ। तो इसको समझिए, आइए देखते हैं। And he, firstly, Manoj, there was an injury and thereafter, Manoj, he died. Now, our defense is that the vehicle, offended vehicle in this case is an ambulance of respondent number 3, Manoj. That is डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की। Manoj. हाँ, कहाँ से आएगी वो एविडेंस? Because the FIR, Manoj, initially was registered by the person, Manoj, who is the driver of the motorcycle, and Mohammad Sohail, that is the deceased, was sitting behind him. हाँ, ठीक है। This is the FIR by Mohammad Sajid. हाँ। And most importantly, Manoj, this Mohammad Sajid has not been examined in this case. And what has been done? आपने किसको एग्जामिन किया? आपकी एविडेंस दिखाइए। गाड़ी किसकी है? FIR कहाँ है? पहले FIR में क्या नंबर आया गाड़ी का? FIR FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट MP 033656 का चालक। that is our. ठीक है ना जी। ठीक है ठीक है। तो आपको बताना था कि ये गाड़ी कौन चला रहा था, इसको डिप्यूट की गई थी। MP 03 तो मध्य प्रदेश में पुलिस की गाड़ी का नंबर है। पुलिस की। हेल्थ सर्विसेज की कब से हो गई ये गाड़ी? नहीं, हमारा ये कहना है कि जो एक एम्बुलेंस आ रही थी उसका दरवाजा खुला, उससे वो उसकी टक्कर हुई, फिर वो गिरा। अरे वो सब तो आपने क्या साक्ष्य? Unfortunately, Unfortunately, the thing is that the state is Paragraph the biggest litigant, and it is the one of the most careless litigants. 25, paragraph 25 में। Paragraph 25 पढ़िए। ऐसी कोई साक्ष्य ही नहीं है जी। यद्यपि प्रकरण में FIR P2 पुलिस वाहन के खिलाफ लिखाई गई है, किंतु पुलिस ने विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र एम्बुलेंस के चालक अनावेदक क्रमांक 2 अनिल के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस वाहन के खिलाफ लेकर कराई गई थी कि किन परिस्थितियों में व किन आधारों पर उक्त रिपोर्ट को असत्य पाते हुए अभियोग पत्र एम्बुलेंस के चालक के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, इस तथ्य को पुलिस वाहन के स्वामी ऑब्लिक चालक के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता था, किंतु उनकी ओर से ये गाड़ी किसके कब्जे की थी? किसको अलॉटेड थी? ये सर कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें अवार्ड। आप उसको एग्जामिन कराते जिसको गाड़ी अलॉटेड थी। जैसे आपको फाइल अलॉट होती है, ऐसे ही गाड़ी भी अलॉट होती है सरकारी महकमे में। उसको एग्जामिन कराते, उसके ड्राइवर को एग्जामिन कराते, कुछ तो नहीं करते आप लोग। इम्पोर्टेंटली द पर्सन हु हैज लॉज्ड FIR में ये लिखा है कि एक जो आई विटनेस है PW2 इनका रिलेटिव है मोहम्मद शोएब, ही इज द आई विटनेस, उसको एग्जामिन कराया। चलिए, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है उसको मत कराने दीजिए एग्जामिन। एक बार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई, ठीक है, गलत दर्ज हुई, हम तो मान रहे हैं गलत दर्ज हुई, उसको प्रमाणित करने का भार किसके ऊपर है? आपने किसको एग्जामिन किया? आप तो कुछ तो बताते कि साहब फलानी जगह गाड़ी थी, उस वक्त मौके पर नहीं थी, फलाने के कब्जे में थी, गैरेज में खड़ी थी, कि फलाने जगह गए हुए थे दौरे पर, कुछ तो बताते। आपने तो और चले आगे झूठा दूसरी गाड़ी को इम्प्लीकेट कर दिया। खत्म करें इसको? क्वांटम में देखें, क्वांटम में बताइए। चलिए क्वांटम में बताइए। फिर इसमें इनकम इसकी मानी है 4238। किस तारीख का एक्सीडेंट है? 30/4/13। 4238 पर मंथ। एक सेकंड, चलिए क्या करता था ये बता? ये सर कोई इसका इनकम का आया नहीं है, इनमें ये लगा है कि मिनिमम वेजेस कर देते हैं 5520 रुपए थी एक्सीडेंट वाले दिन, 5270 रुपए।
₹5270 से कैलकुलेट कर देते हैं इनको। My lord, 18 for the claimants, I suppose, my lord, nobody is appearing. Let them not appear. Court is supposed to do justice between the parties. नहीं, उनके लिए कोई अभी nobody is मत आने appearing. दीजिए. Whether they are served or not. We don't know, but that is still also I can enhance the compensation. 2015 का सुप्रीम कोर्ट है. Yes, yes. फिर नहीं, if anything goes against, then that's why I submit. I am Yes, appearing for respondent. I am not deciding anything against the claimant. Yes, yes, yes. पीयूष साहब सक्षम है, वो पूरा का पूरा जो है बर्ड खुद देने को तैयार है. अपील उनकी खारिज हो रही है, कंपनसेशन बढ़ रहा है. देखिएगा, दिस अपील इज फाइल्ड बाय द स्टेट being aggrieved of award dated 5/1/2021 passed by learned Motor Accident Claims Tribunal Harda in MACT number 29 of 2018 on two grounds, namely tribunal construed income of the deceased at ₹4238 per month. Deceased who was 21 years of age at ₹4238 per month, which is excessive. And secondly, that during investigation, it was found that accident had actually taken place with an ambulance under the control of non-applicant number 3, Director Health Services, Satpura, but that aspect has been overlooked by the learned claims tribunal. Next paragraph. A perusal of the order, the perusal of the record reveals that accident took place on 30/4/2013 at 10:30 PM है, AM है, क्या लिखा है? सुबह की घटना, शाम की? सुबह की AM. FIR was lodged रात 10 10:30 on 1/5/2013 at 10:30 AM. Full stop. In the FIR, number of the offending vehicle is mentioned as MP033656 belonging to the Police Department of State of Madhya Pradesh, in as much as 03 is a distinctive code allotted to the Police Department of State of Madhya Pradesh. Next paragraph. Though it is the case of the appellants that vehicle of Director Health Services was involved in the accident, but no evidence was led by the appellants. It was duty of the appellant to discharge the burden in terms of the doctrine of res ipsa loquitur and should have at least examined the person who was in charge of the vehicle MP033656 mentioned in the FIR, but this burden was not discharged by the appellant. Similarly, appellant did not examine any independent witness to prove that there is a case of false implication of their vehicle MP033656. Full stop. Next paragraph. These facts become more intriguing in the light of the fact that a policy of insurance issued by New India Assurance Company Limited is available on record in regard to insurance of their vehicle bearing registration number MP02AV4277. ये सर उस एम्बुलेंस का है. ये एम्बुलेंस का नाम. हाँ, वही एम्बुलेंस तो उसी को तो बोल रहे हैं भाई. अरे सुनिए तो आप खो जाते हैं. क्या लिखा? AV4277, that is the ambulance under the Department of Health Services, and thus there was no benefit which was derived by the informant in falsely implicating the vehicle of the police department. Full stop. If the ambulance would not have been insured,
or there would have been any pleading of collusion between the claimants and the health department officials, things would have been different. But in absence of any such pleading, comma, no malefites can be attached in mentioning name of the offending vehicle that is belonging to the present appellant. Next para. There is no justification given for not accepting the version in the FIR and to produce some documents to show on the basis of investigation that it was a case of false implication of police vehicle. Full stop. No such material is available on record. Therefore, first plea of false implication of vehicle of the police department in police ambulance of the Directorate of Health Services is not made out. Full stop. Next para. As far as quantum is concerned, tribunal has construed income of the deceased at ₹4238 per month in an arbitrary and illegal manner. Minimum wages even for an unskilled laborer on the date of the accident, that is 30/4/13, were to the tune of ₹5270 per month. Full stop. Deceased was a bachelor. Yes. Therefore, compensation is to be made accordingly. Annual notional income of the deceased will come out to ₹63240. Full stop. Since deceased was bachelor, it is presumed that 50% of the amount was spent by the deceased on self. Full stop. When 40% is added towards future prospects in the light of law laid down by Supreme Court in Pranay Sethi and multiplier of 18 as mentioned in case of Sarla Verma is applied, total pecuniary compensation will come out to ₹7,96,824. Again, 24 over and above which claimants are entitled to a sum of ₹30,000 under the head of non-pecuniary compensation. Full stop. Thus, there will be an increase of compensation to the tune of rupees क्यों देना तुम क्वांटम पे थोड़ी आए थे, तो कोशिश करवाने के लिए आए थे। 89,816, which this court is entitled to award in terms of the law laid down by Supreme Court in काबिज से ले लीजिएगा, जजमेंट 2015 का रखा हुआ है, इतना। Full stop. This additional amount will also earn 7% interest from the date of filing of the claim petition till the actual date of payment. In above terms, appeal is disposed of.